रजिस्ट्रेशन कर दियो जल्दी। रजिस्ट्रेशन कर दियो, रजिस्ट्रेशन कर दियो। बहुत पिला और रही लेने। मझे मेसेज बॉक्स रे क्लिक कर दियो। रजिस्ट्रेशन और बहुत पिला रही लेने। सरीला रही गले जे कर दियो जल्दी कर दियो। मेसेज बॉक्स रे क्लिक करी रजिस्ट्रेशन कर दियो। So let us discuss. Good evening to all learners. Good evening to all learners. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Okay. So MRD-102. MRD-102 block 1. Poverty alleviation program. Now, proceed and go through vivid analysis on the poverty alleviation program. Independent. In the post-independent era, जगदीश टी के म्यूट कर दियो साउंड जो बहुत पिला रजिस्ट्रेशन करना टी कर दियो प्लीज कर दियो जल्दी कर दियो रजिस्ट्रेशन कर दियो so in the post independent era India has achieved commendable success on many fronts. In the case of agriculture being importers at once time, we are now not only new exporters. Post independent परे स्वाधीनता हासिल परे आमे प्रचुर परिमाण रे खाद्य शस्य विदेश रु मध्य इंपोर्ट करूथिले. So after the implementation of the planning and strategy in our country, so far today we are exporting as donors of food in the world, like donors in the food in the world. In the field of science and technology also, we are on the frontiers of many areas like space, communication and information technology. In spite of all this, our country has the largest number of the poor in the world, and therefore rural development and poverty alleviation continue to be one of the major focus areas of the national development policy. So भारत जेतेबेले स्वाधीनता हासिल कला दारिद्र्यतारे कषाघातरे जर्जरित होथिला. So after implementation of the planning and strategy of the government of India, that after the land reforms, so that we produced huge quantity abundant food grains in our country. Apart from this, from the point of view science and technology, India is so advanced in space science, information and technology sectors also. We are in frontward. So rural development in India is identified largely with the poverty alleviation and policies. So perhaps no country in the world have invested so much time and resources on a poverty alleviation program. भारत रे जो परिमाण रो इन्वेस्टमेंट हो विभिन्न प्रकार poverty alleviation program पाई एवं जेतिकी सरकार समय एवं capital investment करूछन to eradicate the poverty and unemployment from our country, that helps a lot for the rural alleviation of poverty. So need for poverty development and interventions, why we need for development intervention, why we need to eradicate the poverty and create more employment opportunities.
It is obvious that the problem of poverty in India is a major challenge and it needs priority in our development policy. If we want to improve the nations and also compete with the development nations. जदि आमे डेवलपमेंट आड़ को इम्प्रूव करवा देश को ताहले आमे रिच कंट्री बा कैपिटलिस्टिक कंट्री बा डेवलप्ड कंट्री मानक सहित हमको compete करबा पई पड़िबो. So poverty in rural and urban areas is more or less similar, but in terms of numbers, the poor in rural India are nearly 3 times than the urban population. 1/3 of the poverty. That means that about 3 times of poverty, nearly 3 times of poverty prevails in rural area than the urban area. About 3/4 of the total population of the country in rural is rural, and therefore majority of the poor are in the village. It is why Gandhiji repeatedly said that India lives in a village and the development of the nation cannot be achieved without the development of the village. भारत ग्राम रे ही अवस्थित बा समग्र भारत गाँ को लेकरी देश गठन करा जाइछि बा इंडिया लिव्स इन विलेजेस and the development of the nation cannot be achieved without the development of the village. गाँर विकास न होले भारत आम देशर जातीय स्तर रे विकास संभव होबो नाही, कारण भारत गाँर ही अवस्थित. महात्मा गांधी एक कथा रिपीटेडली कहिथिले. So initially it was thought that when the success process of development started, there are numbers of effects to take care of the problem of poverty. This process did achieve the results in countries where industries and the service sector developed faster and overtook the agricultural based economics. Service sector, we know there are 3 important sectors, that is primary sector, secondary sector and service sector. So that the industries and the service sector overtake the primary sector nowadays. आमर द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र बा सेवा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को वर्तमान सुधा ओवरटेक करी चली जिबा इन एडवांस इन फ्रंटवार्ड एग्री चली. So that is the important reason behind it, that what are the reason why there is poverty in our country. India continues to be an agrarian economy which contributes 22%, have done less than 1/4 of the GDP, but employs more than 70% of the rural workforce. Nearly 80% of the farmers have small marginal holdings, and most of them practices subsistence agricultural farming, and landless people depend on labor. The majority of the people belongs to socially weaker section. Maximum लोक होचंती social weaker section आम देश रे. So this is the reason why India is under poverty. A high rate of population growth and a low level of literacy are other important factors which have adversely affected the developmental process. So population explosion, epotre literacy rate low. So that is why India is converted into, and that is adversely affect the developmental process. Next, the slow pace of development in industry and service sector and inability of the non-farm sector to absorb excess labor. जो आमर secondary sector अच्छी, by industrial sector अच्छी, service sector अच्छी, जोडर की वर्तमान automation, computerization हवा द्वारा आउ labor absorb करी पारु नहीं बा अधिका श्रमिक आउ दरकार पड़ु नहीं. Automation system रे ये सबु कार्यक्रम ही चली. So moreover, if there was any trickle down effect, it remained confined to the urban areas only. So urban area रे विशेष करी लोक माने बेसी डिपेंडेंट होचंती for the job, expectation to get the job. So the mostly commonly used method to measure poverty is the head count method, which only describes the number of people
below a certain level of income expenditure. That means per capita income of India's people, and that affect to the national income of the country. So how can we define the poverty? Agora mu kahili je how can we clearly define about the poverty? दारिद्र किभली आमे आकु प्रांजल भाव रे डिफाइन करि परिबा, संज्ञा आमे प्रदान करि परिबा. So planning commission once upon a time defined योजना आयोग हमर ए दारिद्र सीमा रेखा निर्धारण करिबा पई गोटे संज्ञा प्रदान करिथिले. पर हेड न्यूट्रिशनल फूड इंटेक, पुष्टिसार जातीय खाद्य को लेकर से गोटे संज्ञा प्रदान करते आमर योजना आयोग, बर्तमान जोटा को आमे नीति आयोग बोली कहउचंती. सो दैट प्लानिंग कमिशन डिफाइंड दैट को माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करंती. सो व्हेन per day per person in urban area 2100 calorie nutrition if unable to get in urban area, but in rural area about 2400 calorie per person per day if unable to get. So that these category of people are reside below the poverty line. এই ক্যাটাগোরির লোক মানে দারিদ্র সীমা রেখা তলে বসবাস করতে বলি কইଥିଲେ. সো তা মানে নিউট্রিশন ভিটামিনস বা পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য সহরাঞ্চল লোকଙ୍କ ঠাରୁ গ্রামাঞ্চল ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଦରକାର ପଡିଥାଏ. କାରଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ. ତେଣୁ କରି ଦୈନିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2400 କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ ଇନଟେକ୍ न्यूट्रिशनल विटामिन्स जहाँ दरकार करी थाए गाँ गंडा अंचल लोक माने जदि न पाइले गाँ गंडा अंचल लोक माने पर डे पर पर्सन ताले से माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करछन्ती बोली कहबे. सहरांचल अर्बन पीपुल 2100 कैलोरी जदि पर डे पर पर्सन न्यूट्रिशन न पाइले, so they are living below the poverty line. So in this context poverty line is decided by the government of India. So poverty during different times period implemented generation and poverty alleviation program increase in employment is a determinant for the reduction in the poverty. So what are the different poverty alleviation program? The rural people can be divided into three categories like those with land and those with skills and those without land and skills. किछि लोक अछंती जा पाखरे चाष जमी अछि लैंडलॉर्ड्स, those with skills बहुत लोक अछंती जो माने गांगंडा अंचल रे जो मानकर कला कुशल अछि स्किल्ड पर्सन अछंती. आउ किछि लोक अछंती those without land चाष जमी नाही किबा कुशलता नाही बा स्किल नाही. During the initial stage of the rural development through community development program CDP program, holistic approach to develop agriculture infrastructure basic facilities in the villages was adopted. It was assumed that the process of development categories it would take care of each and every category of rural populations, so that there were many reasons for this situation. Some of the important reason why there is disparities between rich and poor. Modern farming being cost intensive. The green revolution was confined to agro-climatically rich areas, while the other regions remain backward. Intensive farming and increase the observation of labor. There was no appreciable growth in non-farm sectors. So that is why automatically that people there is a gap between rich and poor sections prevails in our country. In order to counter these maladies of the development process, a series of special rural development program has been implemented in our country. Measures, some of the important measures introduced during the early 17th century. The most important among these are small and marginal farmers, agricultural laborers and rural artisans. को माने दारिद्र्य जदि आमे देखिले एई कैटेगरी
बा एई माने होचंती दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसबास करचंती. So what are the categories of people are included in poverty, like the landless laborers, marginal farmers, small farmers, landless laborers, rural artisans, craftsmen, hill tribal people, and flood affected area people. এই অঞ্চଳର ଲୋକମାନେ ବା ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି. ସ୍ମଲ୍ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ସାବଡା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ during 1973 and 74, and marginal farmers and agricultural laborers MFL ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ to provide a relief to the rural poor. ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ rural poor ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ଏ Class employment program was introduced during 1974-75. Class employment program गोटा सरकार हाथକୁ ନେଇଥିଲେ. तापर पायलट इंटेंसिव प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सरकार ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ. IRDP प्रोग्राम ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. आउ कोन ନେଇଥିଲେ ना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP प्रोग्राम ମଧ୍ୟ सरकार इंप्लीमेंट କରିଥିଲେ. और नेथले ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जोटा ट्राइजिम प्रोग्राम कहा जाए. तापर डकरा प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज. RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एगुड़ा सब मध्य सरकार हाथକୁ ନେଇଥିଲେ. सेही भली जवाहर रोजगार योजना JRY ये गोटे प्रोग्राम हाथକୁ ନେଇଥିଲେ. ES एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यही सब विभिन्न प्रकार प्रोग्राम सरकार हाथକୁ ନେଇକିରି ताकू आम देश रे विभिन्न योजना समय रे ताकू सब प्रचलन करथिले. हाउ टू एराडिकेट द पॉवर्टी सिचुएशन फ्रॉम आवर कंट्री. सो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जीक्यूशन देखा जाइथिला. सो इंपैक्ट कोन पड़िथा अदर इन द field of human development also there has been favorable improvement. Indicators like health status reflecting crude birth rate, crude death rate, infant mortality rate, life expectancy reveal encouraging trends. एगुड़ा पर हेल्थ एवं एजुकेशन लिटरेसी रेट आ पर आम देश रे अनेक परिमाण रे ग्रोथ बा डेवलपमेंट है. ये सब विभिन्न प्रकार सरकार पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे आम देश रे प्रचलन करथिले. एवं एगुड़ा किभली फ्रुटफुल हे परिबो, सरकार किभली एगुड़ी को सब प्रचर भाव रे काम करि परिबे एवं दारिद्र्य किभली दूर हे परिबो. सो पॉवर्टी इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कंक्लूडेड पॉवर्टी इज ए सिचुएशन ऑफ ग्रीफ डिस्पेयर एंड पेन. जोड़ा मु आगुरु कहिथिली जे नैराश्य गोटा बा दारिद्र्य हूँ गोटा देश रे नैराश्य हताश जंत्रणादायक अवस्था. निराश जिते गोटे लोक माने दारिद्र्य सीमा रेखा बा दारिद्र्य कषाघात रे जर्जरित होता है ताकू से निराश तापर हताशता पाखे पहुंचे एवं जंत्रणा रे छटपट होकरी जीवन टिके हारी थाए. सो इट इज ए सिचुएशन ऑफ ग्रीफ डिस्पेयर एंड पेन. नैराश्य हताश जंत्रणादायक अवस्था दारिद्र्य अवस्था. सो सरकार जो गोटे प्रोग्राम नहीं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मन रख लर्नर्स माने आधरे जिते प्रकार प्रोग्राम अच्छी ट्राइजिम प्रोग्राम बा ES प्रोग्राम बा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बा NRP प्रोग्राम बा RLEGP प्रोग्राम बा IRD प्रोग्राम या धरु गोटे आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे आसीबो. IRDP हो NREP हो JRY हो जिते प्रकार पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अच्छी ताधरु गोटे आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन. सो मिनिमम नीड प्रोग्राम कौन. सो कहीं की मिनिमम MNP प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हेतला. पॉवर्टी इज इन ए ब्रॉडर सेंस इज नॉट merely concerned with food, clothing and shelter, but it is also related to the living conditions, economic and human development.
दारिद्र्य मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कौन ना गोटे लोक बंचिबा पई हेले ताकू दरकार पड़ी थाए अति आवश्यक द्रव्य कारण ह्यूमन वांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 categories in economics like necessity, comforts, luxurious. Necessity, comforts, luxurious. So in order to live in this universe we require firstly necessity. Necessity like food, clothing, shelter. खाद्य वस्त्र बासगृह जेतेबेले हमर नेसेसिटी फुलफिल हो जाए तापर आमे टिके आरामदायक द्रव्य आड़ को गति करि थाउ फुलफिल करिबा पाई सो लाइक हमर सपोज गोटे पिला विद्यालय को जाउची चाली चाली करी ताकू जदि हम साइकिल खंडे दे देले ताल सेटा कंफर्ट हे गला ग्रीष्म दिने आमे जदि फैन टी बुलेले आमे सेटा कंफर्ट रे रहिले तो ये होची जेतेबेले हमर नेसेसिटी फुलफिल हो जाए then we go towards to fulfill the comforts wants. So for example fan is one of the comforts wants. That means comforts goods that all the industrial goods produces they are to try to fulfill our comforts wants. So then after fulfillment of these comforts necessity then we go to fulfill our luxurious wants. So luxurious like fan परिवर्ते आमे जदि एयर कंडीशन व्यवहार करले so that belongs to luxurious fulfillment of the luxurious one. So comforts and luxurious goods can be produced in industrial sectors किंतु minimum needs program जोटा कि food, clothing, shelter जदि गोटे देश रे न पाइबो ताहले सेटा सेही लोक माने दारिद्र्य सीमा रेखा तळे बसवास करछन्ती बोली हमें कहबा comforts and luxury कथा छाडी दियो. सो ए दृष्टि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम सरकार आम देश रे प्रचलन कले. सो लैंड रिफॉर्म स्पेशल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोऑपरेटिव प्रोग्राम से सरकार इंप्लीमेंट कले जे फूड क्लॉथिंग शेल्टर सहित लोक मानकर सोशल स्टेटस एजुकेशन बा लिटरेसी हेल्थ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ वी मस्ट रिक्वायर and having the social relation also simultaneously. And a review of this program during the 5th 5-year plan revealed that while in the field of agricultural production we are able to achieve self-sufficiency, there was a need to improve social service to improve living conditions in rural areas. Social service हम पाइबा दरकार कौन ना वाटर सैनिटेशंस एवं प्रॉपर लिविंग कंडीशंस इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस किभली खाद्य वस्त्र बासगृह परिपूर्ण हला परे मनुष्य कौन से तीनटा केवल बची जीव कि नेभर हमर सोशल सर्विस टू रिक्वायर्ड टू इंप्रूव आवर कंडीशंस इन रूरल एरियाज साइमल्टेनियसली आल्सो वी रिक्वायर सोशल स्टेटस to meet specific needs of the rural people in general and the poor in particular. The concept of minimum needs program was implemented in this context. So here the minimum need program helped a lot to the satisfaction of a basic need was consisting of by the help of the two important elements like meeting the minimum requirements of the family private consumption, food, shelter, clothing is very essential. Apart from this, second one, access to essential services such as safe drinking water, sanitation, public transport, health, education, items of social consumption. एगुड़ा का मध्य ता सहित दरकार पड़ी थाए. खाद्य वस्त्र बासगृह सहित आमको मध्य केते गुडी एसेंशियल सर्विस मध्य दरकार पड़ी थाए. अति जरूरी सेवा आमे सरकार ठुरु पाइबा उचित जे गुडी कहउची सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, all these are the social consumption included in social consumption. Other element like participation of the people in decision making through political decentralization, putting satisfaction of the absolute level of basic needs, full employment, rapid rate of economic growth,
improvement in the quality of employment ये गुडी का मध्य सब दरकार पड़ी थाए हम मानकर. So the basic need accept is wider as it covers both personal and social consumption and also the human rights. ये होची मानविक अधिकार. गोटा गणतंत्र राष्ट्र रे ये सब होची मिनिमम गोटा नागरिकर अधिकार बा ह्यूमन राइट्स. People's participation, employment and growth with justice. The concept of minimum needs covers only the items of the social consumption as the personal consumption components, employment, growth with justice. एगड़ा simultaneous मध्य दरकार पड़ी था. So components कौन सब आधार अच्छी MNP रे बा minimum needs program रे provision of facilities for universal elementary education for children up to age of 14 years. 14 वर्ष पर्यंत जो कंपोनेंट हमर अछि एमएनपी रे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम रे कोन कोन सब कंपोनेंट सब अछि हमर संविधान अनुसार 14 वर्ष पर्यंत पिला माने मागणा रे शिक्षा पाइबा को बाध्य. सो तापरे विद्यालय रे अटेंडेंस 100% अचीवमेंट हवा दरकार. Adult education also to improve literacy among the person above the age of 15 years. Adult education आम देश रे वृद्धि हवा दरकार. Thirdly, development of rural public health facilities must be provided in rural areas. Fourthly, supply of safe drinking water to the problem village suffering from chronic scarcity of safe source of water. Next, provision of all weather roads to a village, to all villages. All weather road मध्य प्रचलन हवा दरकार. गाँगंडा अंचल सहरांचल पर्यंत कनेक्शन हवा दरकार. प्रोविजन ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट होम साइट्स गृह बासगृह मध्य सरकार जोगे देबा उचित जो माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले अछंती. एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट इन स्लम एरियाज बस्ती अंचल मानकरे बा स्लम अंचल रे सुंदर भल परिवेश उत्तम परिवेश मध्य सरकार एगुडी को जोगे देबा उचित. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मध्य सरकार करिथाय. ग्राम्य रे गाँगंडा अंचल रे विद्युतकरण मध्य दरकार. एगुडा सब कंपोनेंट ऑफ एमएनपी प्रोग्राम. सो कौन सब डेवलपमेंट है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रोग्रेस आमे सब जहा डिस्कशन करले ता थ्रू हमर एलिमेंटरी एजुकेशन रे डेवलपमेंट है. एडल्ट एजुकेशन मध्य ग्रोथ है. रूरल हेल्थ मध्य डेवलपमेंट है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सब सेंटर फॉर पॉपुलेशन अबाउट 5000 इन प्लेन एरियाज, अबाउट 3000 एरिया रे इन ट्राइबल एरिया रे हिल ट्राइबल एरिया रे मध्य स्थापना है स्वास्थ्य केंद्र मान. तापरे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी जोटा कहंती फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 30000 30,000 अंचल लोक थिबा बसवास करथबा अंचल मध्य पब्लिक हेल्थ बा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मध्य स्थापना करा जायछि. तापरे सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मध्य स्थापना करा जायछि. जो अंचल रे लखे पाखापाखि लोक अछंती कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मध्य स्थापना करा जायछि. सेही बोली ये सब हेल्थ उपरे. तापरे रूरल वाटर सप्लाई एगुडी को मध्य वर्तमान सरकार स्टेप नउचंदी ताकू डिफरेंट एरियाज इन विलेज रिमोट एरिया रे सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू कवर ऑल रेसिडुअल प्रॉब्लम विलेज बाय 1990 to supply potable water, to evolve cost effective technology mix to achieve these objectives within constraint of plan allocation, to take conservation measures of sustained supply of drinking water in rural areas. से भली rural roads all weather roads मध्य सरकार कनेक्टिविटी करिसंती. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्तमान बिजुली गाँ गाँ रे वर्तमान जली उठिलाली आगे नथिला. तो रूरल हाउसिंग मध्य सरकार बासगृह मध्य जोगै दउचंती. एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट पई अर्बन स्लम एरिया मानकर सरकार स्टेप नउचंती. न्यूट्रिशन बा पुष्टिसार जातीय खाद्य शिशु मानकर किभली ठीक भाव रे मेंटेन हेई रहइबो बाइक रहइबो सेति पई सरकार मध्य चेष्टा करूछन. सैनिटेशन मध्य करा जायछि. सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस जोटा हमरा खाद्य सुरक्षा नीति अनुसार
पीडीएस सिस्टम मध्य सरकार मेंटेन करूछंती तापरे एमएनपी परे आईआरडीपी प्रोग्राम सरकार मध्य हाथ को नैथिले बा आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सरकार मध्य हाथ को नैथिले in the initial stage of urban development particularly during 1950 to 60 it was thought that with accelerated economic growth both in agriculture and industrial sector the benefits of the growth will reach to all the sections and all the regions of the country through spread of trickle down effect. So absolute poverty particularly in India we can categorize that India having two category of poverty like absolute poverty and relative poverty ये दिटा माने बुझिबा पई पड़िबो हमकु absolute poverty माने अतिरिक्त बा चरम दारिद्र्य अवस्था एवं आ गोटे होची relative poverty बा अपेक्षिक दारिद्र्यता सरकार काहे कि आईआरडीपी प्रोग्राम बा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करिथिले प्लान समय रे योजना समय रे सो ए दिरे को हम बुझिबा पई पड़िबो भारत रे ई दुई प्रकार दारिद्र्य भितरु कोउटा बेसी परिमाण रे देखा जाउछ out of these absolute poverty and relative poverty what are the type of poverty also prevails in advanced countries or rich countries we can now define it so absolute poverty means when the people unable to get the basic needs to sustain their life in this universe जेतबेले लोकटिए जीवन धारण करिबा पई अति आवश्यक द्रव्य न पाइतांती सेतेबेले से लोक दारिद्र्यर कराळ चक्र रे माने कराळ चक्र रे जंत्रणा रे छटपट होउछ ताको हमें कहिबा सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन आवर कंट्री स्वाधीनतार ए पर्यंत सुधा हमें देखिबा भारत रे ए भली लोक मध्य आम देश रे अछंती रास्ता घाट एवं गछ मूले मध्य जीविका रहीकरी सेमान जीवन धारण करूछंती अनेक लोक मध्य आम देश रे ए भली बा आम गाँ गंडा अंचल रे रूरल बा ग्रामांचल रे देखिबा पई मिलुछ शहरांचल मध्य अनेक समय देखिबा पई मिलुछ एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो माने कि बंचिबा पई दिन को खाद्य वस्त्र बासगृह पाई न थान जो मानकर बासगृह मध्य अनेक लोकंकर ए पर्यंत नाही एवं खाद्य वस्त्र मध्य पाई न थांती minimum needs जो गुडाक so this category of people belongs to the absolute poverty when the people unable to get food clothing shelter to live in this universe another type of poverty known as relative poverty so what is the relative poverty now relative poverty when there is a vast gap between rich and poor or when there is gap between income and wealth among the people आय संपद रे जेतबेले के बड़ धरणर पार्थक्य देखा जाय थाए सेते बेले आमे त कहबा रिलेटिव पॉवर्टी बा अपेक्षिक दारिद्र्यता ता कहै दिबो आय संपद रे थिबा ए फास्ट गैप बिटवीन इनकम एंड वेल्थ among the people we can say it is relative poverty आकु कहबा रिलेटिव पॉवर्टी बोली कहबा बा ओडिया रे कहंती अपेक्षिक दारिद्र्यता माने धन संपद मध्य आय बा संपद मध्य रे गोटा बड़ धरणर गैप पार्थक्य जेतबे देखा जाय सेतबे आमे कहबा रिलेटिव पॉवर्टी आमे जानिचंती केते गोटी लोक आम देश रे धनी मात्र 8-10 टी लोक होचंती पूंजीवादी लोक टाटा रिलायंस जिंदल एवं बड़ बड़ शिल्पपति बा जो माने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रो मालिक जियो कंपनी अंबानी ग्रुप एमाने सब होचंती रिच सेक्शन मात्र 10% लोक आम देश रे पूंजीवादी लोक जो माने के समग्र अर्थनीति को भारत रे कंट्रोल करूचंती आउरी अनेक लोक जे कि दारिद्र्य रो एब्सोल्यूट पॉवर्टी भितरे घांटी हेउचंती किंतु रिच कंट्री मानकर से बड़ी पॉवर्टी अच्छी नो डाउट भारत भली पॉवर्टी नहीं एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं but there is relative poverty only appears in rich country like America, Britain, German, France, Australia सेठी मध्ये दारिद्र्य नो डाउट किंतु भारत भली सिचुएशन नाही पिक्चर नाही
सेठी गोटा धनी दरिद्र मध्य पार्थक्य अच्छी किंतु 90% आर बिलोंग्स टू रिच कैटेगरी ऑफ पीपल ओनली 10% आमर अपोजिट 10% बिलोंग्स टू रिलेटिव पॉवर्टी so that a national program minimum needs program that anti poverty program with the government launched so in this context we can go through the vivid analysis IRDP program as like the development agency by CADA program hill development hill area development program and also had components of for direct assistance to beneficiaries. These overlapped with those of SABDA program and MFL program and integrated a rural development program by IRDP was launched during 1978 covering 2,300 blocks firstly which are already under SFDA program, DPAP program, CADA program इत्यादि जो गुड़ी कवर करथिले आगु जोड़ा प्रोग्राम सब होइतला तापर आईआरडीपी प्रोग्राम को सरकार 1978 मसिया लॉन्च करिकरी ताकू प्रथमे 2300 ब्लॉक रे प्रथमे इंट्रोड्यूस करले तापर ता सारा भारत को एक्सपांड करा गला सो व्हाट आर द इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ आईआरडीपी प्रोग्राम लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इनकम वाज अप्लाइड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज सो जो माने बेनिफिट पाइबे आईआरडीपी प्रोग्राम रु सरकार थिला जो माने दारिद्र्य सीमा रेखा तळे बसवास करूथिबे सेमानकु आईआरडीपी स्कीम रे अंतर्भुक्त करा जे बोली सरकार डिसीजन नेले द पॉवर्टी लाइन इनकम ताल इनकम सेमानकर केते थिबा दरकार फिक्स्ड लाइक 3500 पर ईयर फॉर एन एवरेज फैमिली ऑफ 5 पर्सन गोटे परिवार यदि 5 जन लोक थिबे ताले तांकर जदि आय 3500 टंका रु कम थिबो ताले सेमाने इनक्लूड हेबे ए आईआरडीपी स्कीम रे सो फैमिलीज विथ एनुअल इनकम बिलो 3500 वर आइडेंटिफाइड बिलो पॉवर्टी लाइन बा बीपीएल फैमिली तक बोली कहबा एवं द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज वाज डन थ्रू द बेसलाइन ऑफ अ सर्वे फैमिली इनकम बेसलाइन थिला फैमिली इनकम को देखि आईआरडीपी स्कीम को लागू करा जाउथला सो at least 30% of the total beneficiaries were supposed to be SC category scheduled caste 30% को निया जाउथला एवं एसटी कैटेगरी मानन को 50% लोक मानन को निया जाउ इंक्लूड करा जाउथला आईआरडीपी स्कीम रे सो that women categories are also women beneficiaries from all categories जनरल लोक हो बा एससी एसटी तांको 33% निया जाउथला आईआरडीपी स्कीम रे अंतर्भुक्त करा जाउथला तापरे 40% तक इंक्रीज करा गला वुमेन बेनिफिशियरी मानकु so the self employment project should cover all the following like program for agricultural development including efficient utilization of land and water resources एसु प्रोग्राम समानंग पई जो स्कीम रे अंतर्भुक्त करा जाउथला आईआरडीपी स्कीम रे कोन सब ओ स्कीम रे तांको इंक्लूड करा जाउथला लाइक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे समान को ट्रेनिंग दिया जाउथला अलाइड एक्टिविटीज गो पालन मेष पालन कुकुड़ा चाष करिवा एवं बतक चाष करिवा छेली पालन करिवा ए गुडी को सब तांको सब ट्रेनिंग दिया जाइकरी लोन फैसिलिटी सरकार दउथले सो प्रोग्राम ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एज ए सब्सिडियरी ऑक्युपेशन डायरेक्टली मेल टू स्मॉल पिजन्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड कारण माना गाई गोरु पालन करिवा छेली मेंढा पालन करिवा कुकुड़ा फार्म करिवा ये वर्ष तमाम इनकम जोगै थाए थ्रू आउट टू ईयर द बेनिफिशियरीज will earn income sufficient income they will earn तनु करी allied activities सरकार बेसी गुरुत्व दउथले प्रोग्राम्स ऑफ मेराइन फिशरी बा मत्स्य चाष करिबा पई मध्य सरकार ट्रेनिंग एवं बेनिफिशियरी मानकु अनेक परिमाण रे क्रेडिट फैसिलिटी दउथले ए आईआरडीपी स्कीम रे प्रोग्राम ऑफ इनलैंड वाटर एंड ब्रैकिश वाटर फिशरीज to maximize output of fish per unit of water program of social forestry सामाजिक वन प्रकल्प मध्य सरकार हाथ को नैथिले एवं ताकू दारिद्र्य सीमा रेखा तळे थिबा सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम रे सेमानकु
विभिन्न काम धंदा जोग देउथिले प्रोग्राम ऑफ आर्म फॉरेस्ट्री थ्रू स्मॉल पीजेंट हाउसहोल्ड village and cottage industry including handloom sericulture beekeeping important occupation for the artisan class of the rural population so लोक मान को मध्य मौमासी चालन मौमासी माछी पालन करिबा चाष करिबा सेरिकल्चर करिबा एक्वाकल्चर करिबा एवं हैंडलूम हस्तकर्म करिबा ए गुडी को सब विभिन्न प्रकार कार्य सब जोगो देथिले आईआरडीपी स्कीम रे सर्विस सेक्टर मध्ये सेबला रूरल इकोनॉमी के आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर पुअर फैमिलीज प्रोग्राम फॉर स्किल फॉर्मेशन एंड मोबिलिटी ऑफ लेबरर मीट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर एंड डेवलपमेंट वर्क्स सो ए जो आईआरडीपी स्कीम रे गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा जायतला याकू के प्रशासनिक दायित्व रे के रहिबे याकू के परिचालना करिवे इत्यादि से गुडी करे हमर डीआरडीए सेतबळ थिला डीआरडीए बर्तन जोटा कि जिला परिषद होईछि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक हमर जिला मानकरे गोटे डीआरडीए स्थापना करा जायतला द डिस्ट्रिक्ट एजेंसी व्हिच वाज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर earlier for implementing various programs like सप्ताह प्रोग्राम डीपीएपी प्रोग्राम डीडीपी प्रोग्राम काडा प्रोग्राम ए जो डीआरडीए सब एगडा सब विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हाथ को नेला एथिरे किए रहउथले ना गवर्निंग बॉडी फंक्शनिंग डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलापाल थिले मुख्य एवं तांका सहित के थिले एमपी एमएलए एवं जिला परिषद चेयरपर्सन एमान सब मेंबर सब थिले एवं एनजीओ मध्य मेंबर थिले एमान सब को नेगरी गोटे जिला परिषद स्तर रे बा हमर डीआरडीए स्तर रे विभिन्न प्रोग्राम हाथ को नउथिले एट द ब्लॉक लेवल द चीफ कोऑर्डिनेटर द बीडीओ ब्लॉक लेवल कारण एटा ग्रासरूट लेवल को जीवन अप टू पंचायत लेवल गां गंडा लेवल को विलेज लेवल को तनो तापर डिसेंट्रलाइज करा जाय बीडीओ का हाथ को सब दिया जाउथला बीडीओ जे के थिले कोऑर्डिनेटर का भीतर ना विलेज सहित डीआरडीए सहित जिला सहित जिला पालक सहित कोऑर्डिनेट करूथिले केते विकास हला गां गंडा अंचल रे सेगुडी को सब तथ्य बा डाटा कलेक्शन करथिले वीडियो के माध्यम रे ताको सबमिट करूथिले कलेक्टर पाखरे बा डीआरडीए रे इज द असिस्टेड बाय एक्सटेंशन ऑफिसर एंड विलेज लेवल VLW एट द विलेज लेवल VLW थिले गां गंडा अंचल रे एवं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर मध्य थिले सेमान सब कोऑर्डिनेट मध्य करूथिले तापरे प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटेशन किभଳି सब इंप्लीमेंट करा जाउथला ना प्रथम होची आइडेंटिफिकेशन करा जाउथला प्रति बेनिफिशियरीज के बेनिफिशियरी पाई परिबे ताको सर्वे करा जाई आइडेंटिफाई करा जाउथला तापरे पॉवर्टी लाइन ने केते इनकम लोक मानकर एनुअल अछि तापरे बीपीएल कैटेगरी एवं अप्रूव्ड डिस्प्लेड विलेज पंचायत लेवल ले एगडा सब डिसीजन होतला बहु माने सब एथरे सब इनक्लूड करा जाई पारिबो सो funds for the program are released to DRDA stipulating that the expenditure would be shared equally by the center and the state केंद्र सरकार राज्य सरकार परस्पर 50% सहभागी हेगिरी ए जो प्रोग्राम जो आईआरडीपी प्रोग्राम को allocate करथि so allocations is held the resources allocation is held between center and state by which the share is equally divided and distributed between center and state ये सब थला आईआरडीपी स्कीम मैक्सिमम टाइम मध्य आईआरडीपी स्कीम टी पड़े सो आउ गोटे प्रोग्राम से बले हेतला ट्राइजिम प्रोग्राम बट ट्राइजिम TRYACM फुल फॉर्म और फुल फॉर्म होची ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ट्राइजिम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1979 a component of IRDP is a part जो ट्राइजिम प्रोग्राम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 रे एटा लॉन्च कराला भारत रे
So the rural unemployed youth are categorized जो माने rural unemployment पिला माने थिले सेमानकु विभिन्न कैटेगरी करा गला प्रथम होचंती लिटरेट एंड स्किल्ड फर्स्ट होची लिटरेट एवं स्किल्ड थिबो ये कैटेगरी गोटे ग्रुप पिला माने आ गोटे कैटेगरी होची लिटरेट एंड अनस्किल्ड जो माने कि लिटरेसी अछि बा शिक्षागत योग्यता अछि किंतु कुशलता नाही अनस्किल्ड थर्ड कैटेगरी होची इलिटरेट एंड स्किल्ड फोर्थ कैटेगरी होची इलिटरेट एंड अनस्किल्ड so while the fourth category was mainly dependent on wage employment the other three categories would be provided with a skill that would help them not only in starting their own micro enterprises but also in creating employment for many others. So tourism helps a lot for the rural youth. Under this program, a target of 40 youth, both men and women, in each block every year we have to be selected and trained in skills and entrepreneurship development to enable them to become self-employed. स्वावलंबनशीलता हवा पाई बा आत्मनियुक्ति हवा पाई एई जो टारगेट होची 40 youth both men and women in each block we have to be selected and trained in skill तांको स्किल सब दिया गला छोट छोट एंटरप्राइज उद्योगी सृष्टि होगा पाए तांको ट्रेनिंग दिया गला किभଳି ସେମାନେ सक्सेस हेगिरी स्वावलंबनशीलता हासिल करि परिबे. So apart from providing self employment opportunity, tourism also sought to meet another goal. It was adapted that by providing access to income generating activities in rural areas of rural youth to urban areas could be cut. Moreover, the local need could also be met with local resources, thereby giving fillip to rural development. Fillip the rural development. So गांगना अंचल रे कौन सब income generating capacity सब अच्छी that the raw materials are produced in a rural area from agricultural farmland, so that the government provides the opportunity and finance to establish the small scale or cottage industry and village industry to produce maximum output supply to the urban areas and earn maximum income. So the objective of this tourism are to provide the rural youth from age 18 to 35 years of age, 18 to 35 वर्ष पर्यंत थिबा youth मानकु from families below the poverty line were trained and technical skill provided to enable them to take up self-employment, technical training इत्यादि वैषयिक ज्ञान कौशल इत्यादि सब जगह दिया गला. So gainful employment on a full-time basis which result in an income sufficient for the family of the youth to cross the poverty line. Self-employment and gainful employment full-time income basis रे जदि सेमान को जगह दिया जिवो एई tourism माध्यम रे प्रोग्राम माध्यम रे ताले सेमानकर दारिद्र्य सीमा रेखा तळे थिबा लोक माने दारिद्र्य सीमा रेखा ऊपर को आसी परिबे. So IRDP was operation firstly 2300 blocks कोडा IRDP जेतबे लॉन्च करिथिला. So as the problem of the rural youth was thought to be pressing, tourism was introduced 5000 blocks firstly in the country. So strategy kon thila that tourism training are given a stipend and tool kit. Tourism program रे समान कोन दिया जाउथला ट्रेनिंग दिया जाउथला टूल किट मध्ये दिया जाउथला. On the successful completion of a training they become eligible to receive subsidy, credit income generating asset under IRDP. तांक सब subsidy मध्ये दिया जाउथला जा फल they will motivate to proceed their work activities in rural areas. The objective of tourism was to projects were to be integrated once. Beneficiaries were to be from IRDP target groups. जो माने IRDP रे थिले जेतबे tourism program launch कला जो माने IRDP रे स्कीम रे सब इंक्लूड कराइथिले सेमान को मध्ये tourism रे अंतर्भुक्त करा गला. At least 50% of the youth who have to be trained for self employment.
either from for secondary or tertiary sector. जो 50% सिलेक्शन करागला से माने सेकेंडरी सेक्टर किंबा टर्शियरी बा थर्ड सेक्टर रे समान को जॉब दिया जाउतला तापर ट्रेनिंग ऑफ ऑल बेनिफिशियरीज आर टू बी funded out of TRIZIM funds. Wage employment training was to be in secondary and tertiary sector. Wage employment madhya sabu diya gala ei jo secondary ebang service sector re. तापर performance thila very good performance was prevailed and acquired by the government from this program. तापर आ गोटे सेबा थला डकरा प्रोग्राम को जाय ताकू ए सब आसे गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ट्राइजिम प्रोग्राम हो बा डकरा प्रोग्राम हो बा एआरडीपी प्रोग्राम हो ताजो गोटे पडिगो निश्चित भाव रे जानि थाओ पिला सो डकरा प्रोग्राम माने डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज ताकू जाय डकरा प्रोग्राम सो ए डकरा प्रोग्राम रे कोन होची ना हमर सब विभिन्न प्रकार स्कीम सब निया जाय सरकार implement kale tale eithre the basic objective of dakura program is to provide rural women mananku ethi sabu involvement karagala with productive income generating asset and credit also enhance their skill and women empowerment given most opportunity important opportunity to earn income महिला मानकु सशक्तिकरण करागला एठी विभिन्न इनकम जनरेटिंग capacity by sarkar motivation madhyan dele further it is seeks to provide an effective organizational support structure so that more effectively the women involved may receive assistance in the production of goods and services mahila mane bibhinna prakar hatare badi tiyari kariba pampad tiyari kariba achar prastut kariba silai machine sthapan kariba ye sabu mahila manank dwara bibhinna prakar କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ sarkar sabu ebong kandhei tiyari kariba ए सबु सरकार विभिन्न प्रकार ए डकरा प्रोग्राम माध्यम रे सरकार सेमानकु ट्रेंड करले जा फल रे वर्किंग कैपिटल टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स एंड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सरकार मध्य सबु जोगै देले so steadily this program was launched during 1990 to 91 so funding support it's good fund सब आसिला the main financial assistance is provided by the central government केंद्र सरकार ए आर्थिक संबल सब जोगे देले काना महिला सशक्तिकरण महिलांकर इनकम सोर्स वृद्धि होबा पई the central government releases the central shares and traveling allowance for the group organization directly to the DRDA को फंड गडा सब DRDA को सरकार जोगे देले the state government in turn released their shares in the grant and traveling allowance to the group and the group organization respectively so dakra program रे state government madhya kichi financial assistance madhya support karithile so dakra is to improve the socio economic conditions of women and children in rural areas particularly government focuses on the how to improve the women and children economic conditions and socio-economic conditions. It is important to train women so that they are able to make better use of the skills acquired to enhance their productivity. Under DACRA program, training is provided by various agencies at different levels. Poultry farming, pottery, soap making, candle making, fishing, basket making, এই सब जोड़ा महिला मानक द्वारा संभव हे परिबो महिला मानक द्वारा जोगुडी को भलो भलो प्रोग्राम सब बा कार्य समान सब करि पारथांती सेही सब प्रोग्राम गुडी को समान द्वारा करा गला तापर आ गोटे प्रोग्राम थिला JRY जवाहर रोजगार योजना has helps a lot for the rural youth more than 2/3 of the rural population is directly dependent on agriculture. The distribution of the land, however, is skewed. So that is why the main source of employment for most of these people in agriculture. So agriculture helps a lot for the eradication of the poverty in our country. The rural unemployed can be divided into like literal skill, literal unskilled. जोड़ा सब हमें आलोचना कले. So this program helps a lot
to eradicate the poverty. The two programs under implementation, wage employment program. This JRY program particularly focuses that is wage employment program. The two programs under implementation during the 4th and 5th 5-year plan. चतुर्थ पंचम पंचवार्षिक योजना रे जोटा थिला ओटा CRE program and PIRE program covering nearly 2000 blocks which are identified as having concentration of agricultural laborers with acute problems of unemployment and underemployment. So these two programs we are most new program ताकू कहला food for work program ताकू लॉन्च कर दिया गला food for work program तापरे हमर कोन करा गला ए जो JRY program in order to realize the benefits of the wage employment किभली wage employment वृद्धि पाइबो it was felt necessary to involve village people especially through the village panchayat and to cover all the villages. So ये जो JRY program कोन हला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP गोटा प्रोग्राम चलथिला एवं RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP रो फुल फॉर्म हला रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम NREP हला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये दीटा मर्ज करी गला से मर्ज कला परे आ गोटे नुवा योजना भाला ताको आगला JRY बा जोहार रोजगार योजना कोटा कोटा मिसिला ताले NREP एवं RLEGP दीटा मर्ज करी गला मिसिकिरी गोटे नुवा प्रोग्राम वाला दैट इज JRY लॉन्च ड्यूरिंग 1989 1999 मसिया रे लॉन्च कला ऑब्जेक्टिव कोन थिला JRY was started with a view to expand coverage of wage employment opportunity to all villages and to achieve objective providing employment to all wage seekers in close proximity to the village. Accordingly, the responsibility to implement the program was given to Grama Panchayat. Grama Panchayat के दायित्व दिया गला जे JRY रे जो माने एई कैटेगरी लोक माने थिबे ताले से माने आदरे इन्वॉल्व होई परिबे से माने बेनिफिशियरी भाबरे गणना करा जाय परिबे. The primary objective of JRY was to generate additional gainful employment for the unemployed and underemployed in rural areas. जो माने unemployed अछंती underemployment अछंती से माने आधरे बेनिफिशियरी भाबरे गणना हेबे. The secondary objective of JRY was to create productive community asset for direct and continuing benefits of the poor and strengthening rural economic and social infrastructure. ये गुडी को सब मध्य JRY रे पिला. सो JRY रे कोन सब मुख्य वैशिष्ट्य गुडी को बा फीचर्स से दिया दिए जिला परिषद वे आर मेड रेस्पोंसिबिलिटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन. सब गुडा के जते पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सब बा अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सब चली थाए DRDA बा जिला परिषद माध्यम रे सब गुडा चली थाए. सो ग्रासरूट लेवल डिसेंट्रलाइजेशन सोशियो इकोनॉमिक किबल डिसेंट्रलाइज करा दिबो जिला स्तर रो ग्रामांचल पर्यंत. तापरे एथरे कोनथला द वर्क्स वेयर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द विलेज पीपल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स वाज टोटली बैंड. जोडा कॉन्ट्रैक्टर सब थिले से मानको टोटल बैन करा गला. कॉन्ट्रैक्टर माने सब नेगिरी लेबर मानको विभिन्न आडे गति श्रमिक भाव रे हटौथिले तेनो ताकु सब ब्रेक कर दिया गला. एवं इन केस ऑफ NREP RLEGP रे जो कॉन्ट्रैक्टर मान नै कि सब विभिन्न काम धंधा रे गति समग्र होतले ताको बैन कर दिया गला. प्रेफरेंस वाज गिवन टू एई प्रोग्राम रे JRY प्रोग्राम रे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोक मानको अधिका पिला मानको गुरुत्व दिया गला. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन मानको मध्य 30% दिया गला. एथरे फूड ग्रेन्स एज पार्ट ऑफ द वेज कुड बी प्रोवाइडेड फॉर सब्सिडाइज्ड रेट. एगडा सब फूड ग्रेन्स मध्य आदर सब दिया गला. एई बेले सब विभिन्न प्रकार कार्यक्रम निया गला. तापर कंपोनेंट्स ऑफ आधार JRY रे आउट सब कोन कंपोनेंट सब थिला ना इंदिरा आवास योजना एगडा सब लिखिबो परीक्षा खाता रे खाली पॉइंट दे के खाली 2-4 ढाल लेखा लिखि देबो लंग क्वेश्चन पड़ले बेसी किछि लिखिबा दरकार नै. तापर मिलियन वेल्स स्कीम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जानिछो जे
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଅପ୍ ଟୁ 14 years पर्यंत जोटा कि भारत संविधान अछि जे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लासरूम इन स्कूल बिल्डिंग वाज मेड अंडर JROE प्रोग्राम ड्यूरिंग 1991 द प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कहा कहबा ना कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लासरूम इन स्कूल बिल्डिंग नुआ नुआ सब क्लासरूम स्थापना करबा एवं पिला माननकु पाठ रे इन्वॉल्व होवा पई सचेतन करबा ता कहआ जाय ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नुआ नुआ स्कूल सब स्थापना करबा इत्यादि ता माने शिक्षार प्रसार घटाइबा एगडा सब थिला हमर एई सब प्रोग्राम रे तापरे हमर एई सब प्रोग्राम माध्यम रे गोटे जिनिस हेला आसीबो आ गोटा होची एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एटा मध्य गोटे लॉन्ग क्वेश्चन से भली विशेष करी हमर JROI बा IRDP एई सब प्रोग्राम रे तो आसी थाए परीक्षा रे सो हमर let us instruction आसीगलानी so today I remain stop here so आसंता काली पुणी कंटिन्यू करिबा प्रत्येक जो प्रोग्राम गुड़ाक रहा तादरू समस्ते मन रख सर एक्सक्यूज मी सर पॉइंट वाइज सब पॉइंट वाइज लिखिबो परीक्षा रे आगे टिके डेफिनेशन दे तापर ताकू फीचर्स गुड़ाक गला तापर स्कीम गुड़ा केमिति जिला परिषद बा डीआरडी माध्यम रे सेगड़ा सब इंप्लीमेंट करा जाउची ब्लॉक लेवल ले केवली करा सब पूरा सिमिलर जत्ते फंक्शन सिमिलर टिके आईडिया नै गेले क्वेश्चन पैटर्न कर दे परिबो so I remain here so good night to all learners voice clear होची क्लियर होनी सर वॉइस क्लियर होनी सर मु कोन कहउतली कि सर शॉर्ट क्वेश्चन आसेला हम के क्लियर होनी हेलो सर ऑनलाइन एग्जाम रे तो शॉर्ट क्वेश्चन आसे ना सर ऑनलाइन एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन ले केमती लिख दियो सेटा सुनो ऑनलाइन हबो कि ऑफलाइन हबो सेटा की कहि परिबे नै जेते एते आगु फोरकास्ट करबा डिफिकल्ट प्लाय तो हमर एग्जाम गुडा जेते गत पैंडेमिक पीरियड रे मध्य परीक्षा करा जायतला ऑफलाइन ना पिला माने दउतले आमी सब ड्यूटी करथु से एबे किछि जणा पडु ठीक टाइम देखि सब गवर्नमेंट इग्नो का ठीक टाइम देखि प्राय ऑफलाइन रे परीक्षा न होले कारण इग्नो पिलांग पई सब होछि एलाबोरेट आंसर जोटा लॉजिकल आंसर का कहै छै एलाबोरेटली लिखेबा पठाए जदि शॉर्ट क्वेश्चन कोच ऑनलाइन रे यदि परीक्षा हला मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू आसीबो हां सर किबा आ गोटा मेड होछि म कहि दोछि सुनो एमसीक्यू आसीबो किंतु एमसीक्यू आसीबोनी कारण एगडा सब लॉजिकल आंसर गडा को एगडा सब दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्नर उत्तर तमे अटेंड करबा पड़िबो सपोज 2 मार्क आसला सपोज